Hi and welcome. Salam, namaste ne not maja but still maja. तो ये as I told you in our last vlog हम आए कब्रिस्तान में. This is कब्रिस्तान of संगोदरा. Jarenish says एक वक्त था ऐसा लगता था ये जन्नत है यहाँ से जाना नहीं है. But you know आजकल with advancement people move गांव फिर खाली होते गया. ज्यादा लोग मेंटेनेंस नहीं कर पाए और उसकी हालत was okay not that bad but ठीक है. The main thing was they had a gazebo kind thing. तो मेरे को पूछा गया कि you think you do you know क्यों रखा है वो? I like no, I really don't know. Let me know if you know or what you think in the comments. I'll definitely let you know वो क्यों रखा था. बस फिर रात को लायन तो नहीं दिखा तो दिन में हमको ये क्रोकोडाइल्स दिखे और काफी हो गए हैं. रेनिश सेज पहले ये नहीं थे बट अब इतने हो गए हैं कि उनकी तादाद बहुत ही बड़ी है. यस, आपको भी यही सोचने में आता होगा कि don't these crocodiles eat these buffaloes or aren't these buffaloes being troubled by them? Either or. पता नहीं, but yes, they actually live in mutualism और harmony I can say. ये दूसरा हमको तीसरा दिखा. एक तो वो पानी में था आपने देखा. बस सब देखते हुए this is some new project coming up. इतना बड़ा होटल बन रहा है. Like I was told, when this gets started, it's going to be a big trouble for other businesses. तो आप देख रहे हो बिकॉज मैं टफारिया जाके आई थी. आई वाज टेलिंग रैनिश ये कैसल लग रहा है मेरे को एंड इट्स एक्चुअली लुकिंग लाइक अ ह्यूज कैसल. लुक एट द बाउंड्री. मतलब इतना बड़ा है ये और अंदर से इतना काम नहीं हुआ है बिकॉज दे से देयर आर सम लिटिगेशंस और व्हाटएवर गोइंग ऑन. एनीवेज तो बढ़ते हैं आगे. वी टुक आवर कजिन्स टू चित्रावड़ और फिर हम लोग यहाँ पे आए आगा खान स्कूल देखने. So it's a very proud for me being from Aga Khan Academy, being Aga Khani and being absolutely glad to visit this. अब हमने हमारा लक ट्राई किया. सिक्योरिटी को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज हमको आप टूर लेने दोगे या हम अपने आप घूम लेंगे. बट इट वॉज रियली माई अम्यूजमेंट कि देखा वो इतने वेलकमिंग थे. उन्होंने लिटरली हमारे लिए चाबी ले आए, परमिशन लिया और ये पूरा स्कूल का हमको टूर दिया. जस्ट लुक एट दिस. आई एम स्टैंडिंग ऑन दैट ग्लोब और मैंने पूरा विसिनिटी लिया. इट्स अ ह्यूज ह्यूज सेटअप. मतलब गांव में इतना वेल डेवलप्ड है. आई वाज शॉक्ड. So this school is situated in Chitrawad near Gir region of Gujarat. It is surrounded by greenery and close to rural communities. This was established in 2003, part of the Aga Khan Education Service, India. It started with a small number of students and now serves 500 plus learners. If you see the curriculum, it follows Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board. That's GSHSEB. So you will have the education that is offered nursery, primary, secondary, higher secondary, that's up to grade 12. So you see their classes itna beautifully banaya tha, the way it was decorated. This was holiday time. I think it was a weekend, that's why. बट एब्सोल्युटली अमेजिंग वॉज. अगर आप देखो थीम्स फिर उनके बोर्ड हर चीज़ बहुत ब्यूटिफुली डेकोरेट किया था. इट वॉज नॉट लाइक बिकॉज इट इज़ अ विलेज वन तो उसका डेवलपमेंट बराबर नहीं होगा या अंदर फंक्शनल बराबर नहीं होगा. एवरी थिंग वॉज लाइक अप टू मार्क जैसे हमारा एक जनरल स्कूल में होता है. So their academic focus is basically on critical thinking, problem solving, communication skills, and consistently they have been getting amazing academic results. Then the sir who was taking us around also shared that how they have expatriates and people from different places and everyone comes to contribute to this Aga Khan school. Holistic development is the approach they have. So equal importance is to sports, arts and leadership activity. So you'll not see that khali utna hi chal raha hai and rest of the things are not taken care. I was very fortunate to visit that place where जो अपना dresses मिलते हैं Indian dresses, the women's there in the village actually put the studs on them. Then this my mother-in-law encouraged me to take the video. उन्होंने कहा कि निलोफर इसका फोटो ले, वीडियो ले and mention in your video कि ये घर कैसा कबाड़ था and one day we will develop it. But then we were on the way back to Navsari.
After finishing everything, ye chicken khaya, roti khaya, then we had some prawns. Because it was a night driving, it's not that easy. You need to keep taking breaks at night as well. और ये कुछ lollipop था. It was good food, not bad. So finally, this was a hotel called Chandni or Chandti. I don't know. It's a big setup, I will not deny. And you see the way their seatings are. I think they even hold the events that they want to do, like they told me was birthday parties and engagement ceremonies, if I am not wrong. तो ये उनका एंट्री है और ब्यूटिफुली यू कैन सी द किड्स कैन प्ले एज वेल. तो उधर झूला था ऑन द एंट्री. यहाँ पर भी यू सी मेनी स्विंग्स आर देयर. देन देयर वाज अ ट्रैम्पोलिन, किड्स डांसिंग ऑन इट और जंपिंग ऑन इट. This is the AC seating area or family seating area. This is the outside natural हवा में. तो ये खटिए थे. You see the cots? I was really loving this part, the way they have kept the fennel seeds and sugar. So it's basically called mukwas in India. After your dinner, majorly in Gujarat, you'll definitely get this. Even if not dinner, they love to eat this anytime. But when I got to know the significance, it's basically for digestion and a lot of benefits added to it. Anyways, खा पी के जब हम ये शूटिंग कर रहे थे, my mother-in-law thought that हो गया, but then I was like no, I'm waiting for you so I can go inside. बस फिर अंदर जाके ये देखा मैंने, पूरा सेटअप का वीडियो लिया, and then I went to their open kitchen. Apparently their open kitchen, you'll see how beautifully they were cooking everything. तो फर्स्ट मैंने शुरुआत किया था आई थिंक टू दिस मुगलाई एंड ऑल दोज थिंग्स दैट दे वर मेकिंग. सो लेट मी फर्स्ट शो यू दिस एंड देन गो टू द शेफ. दिस इज रेनिश वेटिंग कब मेरी बारी आएगी. एनीवेज, सो कमिंग टू दिस लाइव स्टेशन, यू कैन सी यहाँ पे जो भी आप ऑर्डर करते हो दैट इज बीइंग मेड एंड अकॉर्डिंगली दैट इज हाउ द प्लेटिंग इज डन. So I asked him what he's making. He was making some egg curry or egg bhaji thing, and that is how I incurred. So he was pretty quick, but garmi dekhne ka, oh god, it was pleasant cold, but you know when you're near fire, it's pretty hot. Then he added gravy. Again he told I'm going to mix, and look at the size of the tawa. It's actually called tawa bhaji, that's why. एनीवेज, बस ये सब देखते हुए, रोटियां बनते हुए, पापड़ सेकते, सब कुछ देखते देखते हम फाइनली पहुंचे थे हमारा नवसारी. इट वॉज एन अमेजिंग ट्रिप, बट समहाउ आई एम अ लिटिल एग्जॉस्टेड बिकॉज रात का ट्रिप इतना नहीं जमता है. एनीवेज, बट यू समटाइम्स नीड टू गो विद द फ्लो. Bas going with the flow. I hope you guys are liking my vlog, sharing it, and very important is subscribing. The speed you see he's making the chapati and actually वो सेक रहे हैं रोटी को. I hope वही speed से मुझे भी subscribes, likes और shares मिले. So do visit Gir Forest next time and look for lions. Till then, मलसू बीजीवार ने एकदम fine ने सारू ध्यान रखो. So eat well, think well and stay positive.